they are just firing bullets. They're firing bullets on the people who are just throwing stones. Now tell me, this is war? On one side you are firing with bullets, and on other side अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिन मलिक आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। सोच रहा था कि किस मौजू पे वीडियो बनाऊं, तो सोशल मीडिया जो है भरा पड़ा है इजराइल के जुल्म सितम से जो वो नहते फ़लस्तीनियों पर कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पे क्या बोलूं, क्या बात करूं। हांगकांग में यहाँ पे लोग कोविड की वजह से रुके हुए हैं और अदरवाइज़ यहाँ पे भी जल्द से जुलूस करने में लोग पीछे नहीं रहते। तो कोविड-19 की वजह से भी और यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हांगकांग में चल रहे हैं उसको देखते हुए बहुत से लोग खामोश हैं। मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने यही प्रोग्राम बनाया है कि कम से कम हम कुछ इस पे पेशकदमी करते हैं। जैसे बारिश का पहला कतरा होता है, उस कतरे की तरह हम अपनी एफर्ट करते हैं, कुछ इस मामले को शुरू करते हैं। तो फिर हमने एक प्रोटेस्ट लेटर लिखा। मेरे साथ मोहतरम शकील साहिब थे, सैयद आसिम साहिब थे, और हम तीनों ने अपनी अपनी NGOs को रिप्रेजेंट करते हुए एक प्रोटेस्ट लेटर बनाया और सोचा कि चलें कम से कम ये लेटर उनके मुंह पे मार के आते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ये जो चीज़ आप फ़लस्तीन में कर रहे हैं, दिस इज़ अ वॉर क्राइम। लेकिन वॉर कैसी? एक तरफ आपके पास हथियार और दूसरी तरफ सिर्फ पत्थर, और they are holding stones in their hands। मगर वॉर भी कैसी? वॉर भी हम तब कहेंगे जब मुकाबले के लोग हों, मगर यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक पार्टी को आप देखें कि वो उसके पास कितनी पावर है, और दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास सिर्फ हाथों में पत्थर हैं। बहरहाल हम उनको वो लेटर दे के आए और कुछ रिकॉर्डिंग की हमने, कुछ पिक्चर्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये आप सुने बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today on 17th of May 2021 we are here in Admiralty to put our condemnation letter about Palestine to Israeli embassy, and we demand to the Israeli government that immediately stop airstrike and human rights violation in Gaza. We also request to the peaceful people and leaders of the world to support Palestinians and fulfill their needs and support to get their legitimate rights in Gaza. And we also request to the peaceful people and human rights leaders, please play the role to stop airstrike and human rights violation at Gaza. हम यहाँ पर आज बरोज़ पीर 17 मई को इज़राइलियन एम्बेसी आए हुए हैं। मज़म्मती लेटर हमने यहाँ दिया है। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम, मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल सोशल सर्विसेज की तरफ से जॉइंट लेटर उन्हें दिया गया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि फ़लस्तीन के अंदर फौरी तौर पर जो है वो बमबारी बंद की जाए। और हम तमाम पुरअमन लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस हवाले से हर प्लेटफार्म पर अपनी आवाज़ों को उठाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए और फ़लस्तीनी शहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मोहम्मद नईम आसम मेरा नाम है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम से। और जो इसराइल की तरफ से गज़ा पर बमबारी की गई है, हम उसको कंडेम करते हैं और फौरी तौर पर इसराइली हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो बंद की जाएँ और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए, और फौरी तौर पर जो भी मामलात हैं
وہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر توجہ دی جائے، اور جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو زندگی کا حق ہے وہ تمام چیزوں سے افضل ہے، اور اس کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے۔ رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ ہیومن رائٹس چارٹر جو کہ 10 دسمبر 1948 میں پاس ہوا تھا، اس میں بھی اس کی گارنٹی دی گئی ہے۔ تو یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ فوری طور پر اسرائیل اس کو بند کرے، اور وی اسٹرانگلی کنڈیم دا attacks against civilians in Masjid al-Aqsa launched by the Israeli forces, and we condemn the human rights violation. Right to life is guaranteed in the core instruments in human rights charter, and they should observe the universal human rights charter, which was passed and proclaimed by UN General Assembly in Geneva Convention on 10th of December 1948. Thank you very much. Jazakallah khairan kathir. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Mohammad Naeem Asif. I am representing International Human Rights Forum, Hong Kong. We strongly condemn attacks against civilians on Masjid al-Aqsa by Israel. These airstrikes launched by Israel during the holy month of Ramadan in the Gaza Strip have caused the death of many innocent people, including women and children. According to the media reports, more than 200 people were lost their lives during these attacks. We urge the Israeli government to immediately stop the bloodshed of innocent people and to stop attacks on civilians. It is a clear violation of human rights. Right to life is a basic, fundamental, and non-derogable right, which is guaranteed by the many international treaties and human rights charters. We urge the Israeli government to observe the Universal Declaration of Human Rights, which was passed and proclaimed by UN General Assembly in Geneva Convention on 10th of December 1948, and it has 30 articles. The Israeli government should not violate any of them. Lastly, I would say that uphold the human rights, help humanity. Thank you very much. آسم بھائی نے، شکیل بھائی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور میں نے سوچا چلے میں اس کے اوپر آپ لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں گا کہ اب ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور ہم ان نہتے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں تو ایک آدمی کی موت ہو جائے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور کتنا کچھ کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ more than 250 Palestinian Muslims has been killed. Of course there would be some other numbers for Israeli casualties, but those are only few numbers. Count them on fingers. یہاں پہ ہانگ کانگ میں جو سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ایون مسجد میں نماز پڑھنے پہ بھی پابندی ہے، اور یہ کووڈ-19 کی وجہ سے، اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم باہر سڑکوں پہ آئیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ جس طرح سے اسرائیلی آرمی نے مسجد کے اوپر اٹیک کیا ہے، جس طرح نہتے نمازیوں کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے۔ ناظرین، اس سے ہم کیا کہیں؟ یہ وار ہو رہی ہے، وار تو نہیں کہہ سکتے، وار تو آپ کہیں کہ برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایمونیشن کے حساب سے اگر دیکھیں، اسلحے کے حساب سے چیک کریں، تو ایک کنٹری جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پتھروں پہ گزارا کر رہا ہے، گلیل کے ذریعے پتھر مار رہا ہے۔ They have stormed on Al-Aqsa Mosque. They have boiled over 100 of people, and the rubber bullets they are using, they are coated with rubber, but inside are really metal bullet. They are using latest ammunition to kill those children. Let me speak English for those people who are trying to understand what I'm saying. Okay, you can read everything and just compare. Be honest. On one side you see what kind of ammunition they are using, and on other side see what the Palestinians are holding in their hand.
They're holding stones just to save themselves. Israel versus Palestine. Their conflict is in different layers, 1 layer, 2 layers, 3 layers. It's not easy to understand. Yes, but if you want to understand, then you have to go back and see. The history is, you can read the history. How the Israel was created by the Nazi Germany when they tried to destroy the Jewish people. And then there's history of British people, which took the land from the Palestinian people and gave to them and grow them there. And the other countries in that region, they have their own issues and their own plans. And on top of that, different religion. And what is religion? Nobody can sacrifice. It's become very difficult to understand for the common people I'm talking about, that who is right and who is wrong. So what we do, how we understand, I think this is the time. This is time for the people to understand who is on fault. Now, this proper time is a good time to understand. You can't go back to like 75-year history back, but this few weeks when this conflict start, you can see that you can easily find out that who is actually on fault. How? I tell you. See, people were just praying. Nothing was happening. Okay? Nothing was happening. No conflict, peace, Ramadan, Muslim months, they were just praying. And Israeli army start firing rockets on the people who was just praying. Very easy to understand. You can understand who start this fight and who don't want peace. Okay, don't go in the back. We are trying to figure out that who is right and who is wrong. So just consider this small period of time, and you see why this happened. I think they took the benefit of COVID-19 situation going around, and they thought then this is the time, whatever their bad intention is, they can just fulfill. Let me put in another way. If we say the Israeli army fire rockets on the people who was just praying, then obviously you will think, oh, Israeli army is bad. Israeli army is the bad guy. And if you think like, oh no, Hamas is firing rockets on Israel, then we think, oh, it's mean Hamas is a bad guy. So one side we see the Israeli army is a bad guy, and on other side we observe that the Hamas is a bad guy. Okay, equal. Now tell me, when the Muslims were praying in their holy month and they were just praying in peace, the Israeli police, the Israeli army, they start firing on the peaceful people, then who is the bad guy? So this particular period is a good example to see who is good and who is bad. Try to understand. I'm talking to the world. I'm talking to the people who just ignore this situation. This was the most holy month in the Muslim history. This is the most holy period for the Muslims. What the Palestinian people are doing in reaction? They're throwing stones, and on the other side, they are just firing bullets. They're firing bullets on the people who are just throwing stones. Now tell me, this is war? On one side you are firing with bullets, and on other side there's rocks? No, this is not a war. Israel's trying to get more and more land, and they're pushing back Palestinian people. They want to capture their land. They are trying to push them back. And
who know how far they want to push them back. See, my video is gonna be very long and I want to make it short. This is not a fair fight. Now look at this. Israeli army has the most latest technology. They have most powerful army of the world. They have most powerful weapons. And on the other side, you can compare. They can crush the people in just 1 minute. It's just like this. I have a paper knife in my hand and on other side is a real knife. Who will win? Obviously, the person holding a real knife can easily kill the people, can easily kill the guy who has a paper knife. Why I'm giving you this example? That this is not a fair fight. Because they have the most latest technology of the world. They have most powerful weapons. That's why they want to grab their land. They're pushing them back. Killing people, killing children. इस वक्त दुनिया में दो ट्रेंड चल रहे हैं. कुछ लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, कुछ फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं. मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो इजराइल के साथ खड़े हैं. बराए मेहरबानी अपनी सोच को बदलें और दोबारा से इसके ऊपर वर्कआउट करें. देखें कि कौन किस पे जुल्म कर रहा है. क्या आप जालिम का साथ देंगे? आई एम ट्राइंग टू टॉक टू दोज पीपल who are bending towards the Israel. Please check again, check the history, read and try to understand and see who is responsible and what is going on. There are two kinds of trends going on and the people are showing their support for Israel. I don't know how and what is the logic to support Israel. दो तरफ ये दुनिया बढ़ चुकी है, इसराइल की तरफ और फ़लस्तीन की तरफ. नाज़रीन, एक चीज़ तो जो है ना वो रोज़े यहाँ की तरह बिल्कुल क्लियर है और मेरे ख्याल में जो वर्ल्ड है वो इस चीज़ को समझती भी है कि इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादती कर रहा है फ़लस्तीन के लोगों के साथ और उनसे वो ज़मीन हथियाने के चक्कर में उनको पुश बैक कर रहा है. जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है. अल्लाह ताला कश्मीर में भी मुसलमानों को कामयाबी दे और अल्लाह ताला फ़लस्तीन में भी मुसलमानों को कामयाबी दे. हमारी ये दुआ है. तो मैं किसी और वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलूँगा. तब तक दिन मलिक को इजाज़त दीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा. मेरी कोशिश होती है कि जो भी पर्टिकुलरली हांगकांग के जो सोशल मीडिया में कुछ चल रहा है या यहाँ से रिलेटेड हो तो वो मैं आप लोगों के लिए उस पर एक छोटी सी मालूमाती वीडियो बना के आप लोगों के लिए पेश किया करूँ. और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. दिन मलिक को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.